Hi everyone, I'm Elnaaz Norouzi and you should subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now, like right now. Just subscribe now. ये 8 साल पहले ईरान से यहां पर आई थी। उसके बाद सेक्रेट गेम्स, तेहरान 2, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। जुग जुग जियो में अनिल कपूर और वरुण धवन के साथ भी ब्लॉकबस्टर गाना गया था। बट देयर सो मच मोर टू हर देन दैट। वुमन ऑफ सब्सटेंस, एलनाज नूरूजी, कैसी हैं आप? Hi, good to be here. So good to see you. Thank you. I'm so happy. I know. So happy. I might fumble looking at your pretty face. but ठीक है, सब जायज है। मैंने पहला उनसे सवाल पूछा कि यार हम लोग हिंदी में कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने बोला हम जर्मन में भी कर सकते हैं, फ्रेंच में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, चलो पंजाबी में भी कर सकते हैं। क्या बात है, ये सब कुछ कर सकती है, इसलिए वंडर वुमन है। 8 साल हो गए मुंबई में, राइट? जेन्युइनली बताइए, वो कौन से हाई मोमेंट्स थे और लो मोमेंट्स थे फॉर यू मुंबई में इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? लो मोमेंट्स तो बहुत सारे थे। आप सोचो, आप बाहर से आए हो और आपको हिंदी सीखना है, डांस सीखना है, एक्टिंग सीखना है, ये सब करना है, और वो भी बॉलीवुड में, जहाँ ज़्यादातर बॉलीवुड के बच्चे और लोग ही हैं, यू नो, इट्स नेवर आउटसाइडर्स, राइट? सो दोज वर ऑल द लो मोमेंट्स, अ लॉट ऑफ देम। बट हाई मोमेंट्स भी बहुत सारे थे यार, यू नो, आफ्टर गेटिंग ए सेक्रेट गेम्स as your actual first project, it was a big deal. Doing ads with like Salman Khan's and Shah Rukh Khan's, and you know, getting your foot into the industry, working with an Anil Kapoor, being in a Dharma movie. I grew up watching Dharma movies, you know. The reason I came to India were Dharma movies. Yeah. Like Kabhi Khushi Kabhi Gham, Kal Ho Na Ho, Kabhi Alvida Na Kehna. All of these I would watch in German, dubbed in German. So when you get to do those projects, then obviously those are the highs, right? But lows भी बहुत सारे थे। मुझे याद है सेक्रेट गेम से पहले मैं सोच रही थी कि मैं वापस जाऊंगी जर्मनी मम्मी डैडी के पास, क्योंकि it wasn't working out. It felt like कि ये होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अप, सो आई एम गोना स्टे, आई एम गोना स्टिक टू इट एंड आई एम गोना ट्राई। जेन्युइनली बताइए, कास्टिंग काउच फील किया आपने, या देखा है, या सेंस किया है? हाँ, सेंस किया था। ये तो स्पेशली मी टू मूवमेंट से पहले तो बहुत था, मतलब बहुत ज़्यादा भी सेंस किया, पर अभी ठीक हो गया है। अच्छी बात है वैसे, ये जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मी टू वगैरह वगैरह, अभी तो लोग 5 बार सोचते होंगे। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। व्हाई टेक शिट फ्रॉम एनीवन? हाँ, पता नहीं, शायद अभी भी है, शायद न्यू कमर्स के लिए और ज़्यादा है, मेरे लिए शायद अभी कम हो गया है, पता नहीं। पर मुझे लगता है कि मी टू के बाद थोड़ा सोबर हो गए हैं लोग। इनफैक्ट आप एक लीडिंग डायरेक्टर के बारे में आपने बोला था ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट। जी। उसको वापस रीलिव करना मस्ट हैव बीन ट्रॉमेटिक, राइट? कि नहीं? या ऑफ कोर्स, बट आई एम अ पर्सन, मुझे लगता है कि अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो अपने स्टोरी के साथ, तो आपको इट्स योर ड्यूटी टू डू इट। एंड आई फेल्ट दैट it was a very, very bad experience for me, not only what happened, but also because he was telling me before, I was between Sacred Games and his film. He was telling me not to do Sacred Games and to do his film. And with all the behavior and all the things that he was doing, I realized that this would be the wrong choice. This would be the wrong thing to do. And look at where Sacred Games took me. And that film was the biggest flop of that year, you know. So I think karma very much exists for people, and yeah, it was traumatic to think about it, to talk about it. But I'm glad it has changed something. It has done something. All the brave women who spoke made it easier for the women now. पर ये बताओ, जब ये सब आपने बाद में बात किया, right, when the movement happened, जी,
बट जब ये हो रहा था आपके साथ, डिड यू हैव समवन टू टॉक टू अबाउट इट एट दैट टाइम? वुड यू टेल योर पेरेंट्स, या कोई दोस्त था, या अंदर ही रखती थी आप? आप किसी को बता नहीं सकते हो ना, क्योंकि एक तो पेरेंट्स को बताओगे तो वो लोग तो एक तो बहुत दूर हैं, घबरा जाएंगे। हाँ, दे आर ऑलरेडी सो वरीड अबाउट यू। तब फिर ये स्टोरीज भी बताओ उनको तो मर जाएंगे बेचारे तो उनको तो बता नहीं सकते। और आप किसी को अपने टीम में बताओ तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको काम करना है तो वो काम से काम है उन लोगों को, मतलब nobody is going to really care. Then your friends, you can just talk about it to like let it out. Your friends also can't really do anything for you. मैक्सिमम दिल से हम हैं तुम्हारे लिए, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो at the end of the day it's your own decision कि ये जो हुआ है इसके साथ आप क्या करोगे, you know, how are you going to handle it, what are you going to do with it, and at the end of the day you have to be quiet about it because they say it's the industry, सब ऐसे ही हैं, तो चलो it's okay. तो ये आपने कितने टाइम तक बॉटल रखा अपने अंदर? मुझे याद नहीं है कि ये मी टू मूवमेंट कब था, 2018 था शायद, और 2017 सेक्रेट गेम्स 1 आया था शायद. सो फॉर मी इट वाज जस्ट लाइक अ ईयर और समथिंग, बट you saw there were so many women who had kept it for so many more years, right? And then there are these people who say, oh, why didn't you speak up earlier, and all of these things. It's just, I'll give you an example. It's just the same thing with what's happening in Iran right now, if you know. Yeah. 43 years the oppression is happening, people are upset, and you know, but they can't speak up. You know, that when there is a movement, then everyone comes and speaks up, and it then changes something. So I don't see a problem in speaking up when there is a movement, because when we're more, it's louder. And if confidence is there, strength is there, right? So I don't see an issue in that. But as you see, Me Too movement has helped. The movement in Iran is helping right now. So every movement on its own is very strong and important. You know, जैसे मैंने कहा ना, I look at you as a woman of substance, because पहले अपने आप आना, being an outsider from another country, और आज we are chatting about your achievements and still a long way to go, but you've not only focused on entertainment, but आपने ensure किया है कि you also have value adds to other people's lives. जैसे Me Too हुआ, जो ईरान में हो रहा है. इनफैक्ट आपने कहीं ये भी कहा था कि जो ईरानियन women फेस करते हैं वो आपके साथ हुआ है. जी. What was that? मेरे साथ एक्चुअली जो अभी महसा अमीनी के साथ हो गया था, ये मोरालिटी पुलिस उनको रोड में से पकड़ के लेके गए थे, ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार तेहरान में. सो जब मैंने ये स्टोरी सुना, और जब मैंने सुना कि महसा डाइड बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड टू हर, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई ईरान इज गोइंग क्रेजी राइट नाउ. सो आई वाज लाइक, यार ये मेरे साथ भी हुआ था, और ये रोज़ बाकी लड़कियों के साथ भी होता है. सो जो महसा के साथ हो गया वो मेरे साथ भी हो सकता था, किसी और के साथ भी कल हो सकता है. सो वी नीड टू चेंज समथिंग, राइट? एंड ये जो स्टोरी मैंने शेयर किया लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे, इसके बारे में मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं किया था. ओनली माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली नोज अबाउट इट. सो ये भी मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है कि इसके बारे में बात करना, लोगों को बताना, द वर्ल्ड विल नो, राइट? बट इट वॉज अगेन इम्पोर्टेंट बिकॉज शायद लोगों को ईरान में पता हो कि जो हो रहा है क्या है, पर इंडिया में या कहीं और लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये मोरालिटी पुलिस क्या है, ये वैन जो है जिसमें आपको जाना है, और ये लोग आपको लेके जाएंगे और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ लेके जाएंगे. ये जो फीलिंग है, शायद उनको थोड़ा समझ में आए अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि आप मुझे जानते हो, और ये आपके लिए समझना ज़्यादा आसान है. अभी महसा अमीनी कौन है? महसा अमीनी को आप जानते नहीं हो, ये क्या है, क्या हुआ है, you'll forget it. But if you hear, oh, Elnaaz, oh, I know Elnaaz, this happened with Elnaaz, the same thing happened with Elnaaz, oh, they could have hit Elnaaz also, and Elnaaz could have also gone in a coma. Elnaaz could have been dead right now. It's easier to grasp, right?
Because it's with someone who you relate to. Yes. And that's the reason I shared it, because I wanted people to understand how close to home this is. How this could be your sister and your mother or anyone else. जब moral police ने आपको उठाया literally, जी. उन्होंने आपको एक गाड़ी में डाली. जी. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद I went to this re-education center, how they call it, re-education center. They took me there. I didn't know where it is. I didn't have the address. They take your phone, so you can't contact your family. So you're basically somewhere, you don't know where you are, you don't have your phone until they allow you and give you a phone. And what they have done with Massa is she must have resisted, and they must have hit her head so much that she went into a coma and then died. And now how we see also in Iran, they're just killing people all the time. So it's nothing new for them. Re-education center में क्या होता है? माने कितने दिन बिताते हो आप वहाँ? It depends. If you're good to them and if you're like, हाँ आप सही बोल रहे हो, हाँ, I'll definitely change my clothes. This is the wrong clothing. Then they will give you a phone. Your parents will come, bring you the right clothing. You'll wear it and go. But there, they take all of your information. They take your ID. They take pictures of you like you're in a prison. Like they made me write my name, stand, take the picture, turn right, turn left, with the clothes that you had on. And then they will tell you, if we catch you again, because they have your information, if we catch you again with the wrong type of clothing or whatever, it won't be this easy. That's what they just said. So you were let go एक दिन के अंदर? Yeah, I was let go. I was let go because I was smart at that time actually. I had 2 phones. So what I did is I gave them my German phone number and I kept my Iranian and I kept messaging my parents. Because my mom was also in Iran at that time, so I told her what needs to be done, and we had people from the inside that made calls and helped me come out. But that was because I was fortunate enough. Other girls are not. And if they resist, and they resist now because they have to, and it's the right thing to do, because you can't just grab someone from the road and take them and they don't know where they are, and if you force them to, change their clothes and whatever. So when they resist, then they are very harsh with you. They hit you, they do other things. आपकी certain part of your family अभी भी ईरान में है, right? जी, जी. और मैंने सुना है कि आप उनसे बात भी नहीं कर पा रही हैं. जी, जी, जी. Traumatic होगा. हाँ, क्योंकि एक तो जो हो रहा है ईरान में अभी आपको पता नहीं है कि उनको भी कुछ हुआ है कि नहीं, और इंटरनेट बंद है. आपको पता नहीं कि क्या क्या और हो रहा है. हम सबको पता नहीं है अभी कि मतलब लोग हैं रोड्स पे अभी भी कि नहीं हैं. ये लोग इंटरनेट बंद करते हैं ताकि हम लोगों को या मीडिया को पता ना चले कि कितने सारे लोगों को वहाँ पे मार रहे हैं, लेके जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. You don't know. But every day there is news of a new person dying. Every day. There are so many names now. Hashtag Mahsa Amini started, and there are so many hashtags of all the different girls. Yesterday we got to know one 16-year-old girl was gone for 9 days, and the parents got to know that she has died. And they gave them the body. They didn't give them the body back. They said you can't have the body. क्या 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 body के साथ वो पता नहीं ना. They say she was raped and she was hit so much that she died. तो आपकी जो family है जो वहाँ पे है, there's no way you can be in touch. So you can just hope कि वो ठीक है या somebody deep down. अभी थोड़ा they put the internet on at night, so they message us then. पर इतना कि सिर्फ message, no pictures, no videos can go through. वो ठीक है अभी? हाँ, my family is good, touch wood. So glad to hear that. So glad to hear that.